Patiala in Punjab witnessed a clash between pro and anti-Khalistan supporters yesterday. The anti-Khalistan rally was led by the Bal Thackeray faction of the Shiv Sena in the state of Punjab, and they were at the receiving end of violence by pro-Khalistan protesters in Patiala as well. Now, curfew has been imposed in Patiala and internet services has been suspended. And a very crucial piece of information that's also coming in from Patiala is that the Patiala SSP and the IG have been transferred out and their replacements have been announced by the Punjab police, which is in fact been facing a series of questions from the opposition in the state of Punjab about their handling of the situation yesterday. Let me go across immediately for Priyank to Priyank Tripathi for more updates. He's joining us from Patiala. How's the scenario in Patiala this morning, Priyank? Curfew has been reimposed, internet services have been once again suspended, and there have been transfers as well in the Punjab police. Mr. Rakesh Aggarwal, against whom the order has just come out from the Punjab state government, has been holding a meeting with the office bearers of those Hindu organizations who had come here. Let's listen to him. जी और लोगों को भी अपील यही है कि शांति बना के रखें और अफवाहों के ऊपर ध्यान न दें। अभी तेजी से स्थिति सामान्य हो रही है सर, कहीं ना कहीं एक्शन लिया है पुलिस ने या फिर कार्रवाई की? बिल्कुल, देखो इसमें एफआईआर भी काफी रजिस्टर की हैं और जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर रेड भी की जा रही है और बाकी इसमें जल्दी ही हम और भी खुलासे करेंगे। दो लोगों को say about it because your state government is accepting that there was failure and there have been 3 major transfers including you also. देखो ये तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है और जहां तक शांति बनाने की बात है उसमें पुलिस फोर्स हम लोगों ने सफिशिएंट तैनात की हुई है और जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन की चीजें करनी है वो भी हम लोग सारी करके। कितने फोर्स की तैनाती है सर? लोकल इंटेल का कोई फेलियर था? डू यू एक्सेप्ट दैट कि लोकल इंटेल? सारी चीजें सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो कि इंक्वायरी के दौरान और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी क्लियर होंगी, लेकिन जहां तक ये है कि पुलिस फोर्स ने जो काम किया है, एक बहुत बड़ा हादसा जो हो सकता था उसको हम लोगों ने टाल दिया है और काफी पुलिस को कल जद्दोजहद करनी पड़ी, जिसके बाद स्थिति सामान्य आई है। बिना इजाजत ये रैली निकाली गई सर? क्या मजबूरी थी उन कैसे बिना इजाजत रैली निकाली गई सर? हाँ, वो सारी देखो वो सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसमें उन्होंने मंजूरी के बाद कैसे निकाला और इसीलिए उनके ऊपर एफआईआर हुई है जो कि इन्वेस्टिगेशन में सारी हमला हुआ है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की? हाँ, उसमें भी उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है। इसमें छह की उसमें देखो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जब इनको गिरफ्तारी की जाएगी, जिसके लिए रेड्स हमारी चल रही है। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ भी हरीश सिंगला को गिरफ्तार किया। खालिस्तान समर्थक जो है गिरफ्तार किया जाएगा इसमें और भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अब इसका हम लोग खुलासा करेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रारंभिक तौर पे इन्वेस्टिगेशन है। जो हम लोगों का जो मेन एम है वो शहर में अभी शांति एस्टेब्लिश करना है, जो कि शहर में काफी जल्दी शांति हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर ली है। तो फ्लैग मार्चेस चल रहे हैं, पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई हुई है। जो नाइट कर्फ्यू था वो आज हमने उन्हें उठा लिया है क्योंकि शहर में शांति है, लेकिन फिर भी अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सर्विसेज को बंद वाले लोग बाहर निकलेंगे सर, बंद संगठन बुलाया है। वो देखो इन्वेस्टिगेशन में जो वीडियो फुटेजेस हैं उन सबसे वो आइडेंटिफिकेशन चल रही है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जितना भी जिसका जो रोल होगा उस हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किसी को भी लॉ को अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और जो पीस है पंजाब की, पटियाला की, पूरे देश की, उसको किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना। सर जिन्होंने बंद बुलाया है, बंद बुलाया गया। The IG of this range, who has just got his transfer order, has been maintaining that the investigation is going on. But fact remains that so far those group of people who were seen chanting pro-Khalistani slogans have not been identified yet. This is what the local police is saying, and for them the investigation is still going on. In the meanwhile, the state government has already taken action against these 3 top officials from the Punjab police, and new officials like the former IG of Patiala, Mr. Chinna, will be once again joining in as the IG range of Patiala. Back to you.
Right, Priyank, we urge you to stay with us, bringing us live coverage from Patiala. We'll listen into some reactions that came in yesterday as well as this morning, and we'll come back to Priyank in just a short while. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है वो टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेशन वालों पुलिस वालों शेयर की जाएगी ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ स्प्रेड ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करता तो ये तो विश्वास सर 9 बजे बंद बुलाया गया है, इस पर कुछ एक्शन है सर? अभी बात हुई आपकी नहीं किसी से? An alarming thing was pro-Khalistani slogans being raised. Have you also filed an FIR under sections of sedition or the... Yes, though all of that is being examined. Like I said, police action is still on. We are also conducting raids. We are identifying people through the video footage that is now available to us. My basic request to everybody right now is to maintain peace and calm. Things are calm. Things are under control. We are here for you. Curfew has been lifted today at 6 o'clock. But internet services will be suspended from 9:30 a.m. today to 6 p.m. This is not to panic anybody, but just to ensure that the kind of rumor mongering and misinformation that was spread does not happen today. And we just want everybody to not panic and be calm. Everything's under control. Let me take this back to Priyank once again. Priyank, you asked two very pointed questions to the IG, Mr. Rakesh Aggarwal there. One is about his own transfer. The other is about whether or not any action has been initiated against the pro-Khalistan protesters who were also present yesterday. The very fact that the transfers have come, is that an implicit acknowledgement on the part of the dispensation in Punjab that things were not handled properly? Yes, Siddharth. First of all, you allowed such a situation to happen. Then you come out and give your defense in the name of, carrying out a proper investigation. But look at the deployment. This deployment was certainly not needed. The local police would have taken action at the very first go. There were, specific input which was certainly not taken into account seriously. That's why this situation arose where all these people came out, and now the police is saying that they are trying to identify all those individuals. But the fact remains, if the local intel could have been taken, seriously, certainly this thing would have not happened. There were so many viral videos which our colleagues have been, putting out, and we are also trying to indicate on how social media was being misused by these group of individuals. If the news channel and the local people were aware about this kind of viral messages, what was the local intel unit of Punjab Police doing? So certainly, instead of focusing on the real issues, what we have been observing, that they have been, prime focus of the Punjab police officials shifting towards the national capital, because what happened early in the day when the Delhi police used to take action against the Aam Aadmi Party members, now the Punjab police is more focused on taking action against those, political party leaders who has spoken against the Aam Aadmi Party. So that clearly shift the focus from the real issue. This is a bordering state. This is a state which has seen the worst of its time during the time of, militancy, and now what we just heard some people chanting slogan, so we exactly don't know that they are protesters or not, but there was a call which was made by several, Hindu organizations that they will come here and they will protest. While talking about the real issue, Siddharth, this is a state which needs more attention than politicization of several issues. And at this location, okay, let's cut to this visuals where we are showing you that these are the people who have come out in protest against what happened yesterday. These are the members of various organizations who have come here in support, against what happened here. Sir, क्या आप लोग मांगे रहेंगी कि किस यहाँ पे धरना हो रहा है? देखो, हमारे सारे हिंदू संगठनों की मांग है कि कल जो लोग खालिस्तानी समर्थक लोग आए थे, जो लीड करके ले आए गए थे, जिन्होंने बिना किसी हिंदू प्रभोग के यहाँ पे मंदिर पे हमला किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 295, 302, 307 एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जो है निहंग बाने में व्यक्ति माता के खिलाफ अपशब्दों की वर्तों कर रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए
हमने शांतिपूर्ण, तो ये कहा जाता है कि हिंदू जो है दंगा फसाद करना चाहते हैं, हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया। शांतिपूर्वक कानून के ढांचे में हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है, उन लोगों को कह रही है कि जांच जारी है। तो वीडियो तो सारी पड़ी है, अब आइडेंटिफाई नहीं करिए तो ये पुलिस की इंटेंशन के ऊपर सवाल उठता है कि अगर वीडियो के बावजूद भी आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो क्या वो लोग पाकिस्तान से आ गए जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे? वीडियो आपके पास है, सारा पुलिस प्रशासन मौजूद है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? ये तो इंटेलिजेंस का फेलियर है अगर वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। आप आम नागरिक हैं, अगर आप ये बातें बोल सकते हैं तो सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा? यही तो बात है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार एक सिस्टम को चलाने वाली होती है, सरकार के पास पूरा सिस्टम है। अगर सरकार की मंशा सही हो तो 1 घंटे के अंदर दोषी गिरफ्तार होते हैं। परसों अयोध्या में एक मामला हुआ और अयोध्या में जो लड़के थे उनको विद इन आवर्स उनको अरेस्ट कर लिया, उनके ऊपर एनएसए लगा दी। और यहाँ पर उत्तर भारत का प्रसिद्ध मंदिर है श्री काली माता मंदिर, और इसके ऊपर सरेआम दिन दिहाड़े अटैक होता है। एक मोब आती है और मोब आके अटैक करती है। मंदिर का किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं। मंदिर के ऊपर विरोध जो अटैक हो रहा है वो एक मानसिकता के कारण हो रहा है, और वो जो मानसिकता है हिंदुओं को दबाने की मानसिकता, हिंदुओं के धर्मस्थलों को टारगेट किया जा रहा है। और ये मानसिकता के लोग, इन लोगों को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है ये भी आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर सरकार की नीयत साफ है तो विद इन आवर्स अब तक वो बंदे गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे। जो that's the point which these people have been raising, Siddharth, because they have sat down for the protest because the manner in which this incident certainly unfolded, there could have been one reason that one organization was not given or permission to hold a march, but from where all these individuals came out right in front of the police presence, they were sloganing anti-India slogans and pro-Khalistani slogans. So who allowed them, and what is the local police doing so far has been the big worry. So far, just to put it on paper, the IG and SP and SSP have been transferred by the state police of Punjab, but the fact remains that the investigation need to be continued. There should have been more proactive action against that. And Tom, if we can show, these are the people from the Hindu various organizations here who have sat down for the protest. They are raising question that what is the government doing, what exactly should have been done was certainly not done, whether the state police of Punjab is also working under pressure, and whether to shift the onus from the senior officials and the senior members of the police and the government department from the Home Minister of state of Punjab himself. These officers have been transferred. What was the local intelligence unit doing? All these questions are still unanswered. But in between that, the protest has started right outside this Kali Mata Mandir in Patiala. Right. Thanks a lot for that, Priyank. Very comprehensive on-ground report there, including, of course, the testimonies of some protesters who've gathered there to speak out against what happened yesterday. We'll slip into a short break right now.